Hello, everybody. Hello. Yes, sir. So in the last class, we are discussing about the bus arbitration among DMA and processor. In bus arbitration, we saw that there are two kinds of arbitrations. Centralized arbitration and distributed arbitration. You remember that? Anybody remember what was bus arbitration? किसी को याद है बस आर्बिट्रेशन क्या था? किसी को याद नहीं? डीएमए याद है किसी को? डीएमए भी किसी को याद नहीं है? Am I audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. हाँ, डीएमए याद है? कुछ डीएमए जैसी बात हुई थी? Yes, sir. In DMA, we give access to the other IO devices and devices without the intervention of our processor. Yeah, exactly. So the data transfer happens without the intervention of processor, but generally under the control of processor. मतलब ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस इस तरह से नहीं होता, कंट्रोल तो प्रोसेसर का ही रहता है, लेकिन एक बार प्रोसेसर अगर कंट्रोल दे देता है तो फिर प्रोसेसर को उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, एंड देन प्रोसेसर कैन डू अदर थिंग्स व्हाटएवर इट शुड डू एट दैट टाइम. इस प्रोसेस में एक बात ये है कि नाउ देयर इज वन प्रोसेसर and then there may be more than one DMAs. So who will use the bus? That is one important point. इसमें दो तरह के, उसको यूज कौन करेगा? जो यूज करेगा उसको हम बस मास्टर कहते हैं. तो ये बस आप मास्टर आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और बस मास्टर आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं बस आर्बिट्रेशन. याद है ये? और उसमें एक सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन था. मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूं तो शायद आपको याद आ जाएगा. मेरे स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको? यस सर. ये डायग्राम पहले भी हम लोग देख चुके हैं. ये डायग्राम देख के आपको कुछ याद आता है? Could you recall something by looking at this diagram? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों भाई? Can anybody tell me what is happening over here?
initially the DMA controller send bus request Hmm? and that the DMA controller would uh, request for the bus using BR bar and the Yes, बस yeah रिक्वेस्ट, so जिसको भी रिक्वेस्ट करना है वो एक बीआर मैसेज सेंड करके रिक्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और and उसके बाद फिर प्रोसेसर विल ग्रांट द yes बस एक्सेस, राइट। and the top one is bus busy so that is active like तो जैसे ही कोई बस यूज करने लगेगा वैसे ही बस बिजी शो कर देंगे वो। ओके, फाइन। yeah So this is centralized bus arbitration. Here there is a central device who is taking care of everything. This is the process that you already mentioned, and this is just a kind of timing diagram for whole process. So you can see that there is a bus request has been sent, and eventually after receiving the bus request, processor will send a bus grant 1 signal, and then it will reach to DMA1, and then DMA1 will forward it to DMA2 by sending signal BG2. And once this bus is occupied by DMA2, a busy signal is asserted by DMA2, and this is going, I mean, now this is busy, so no more requests will be given. And because of this busy signal, the processor who actually sent bus grant 1 signal will now relinquish the control over the bus, and now the data transfer can happen. ठीक है? Is it okay? So this is the portion where bus grant, DMA controller 2 is actually asserting bus busy signal. This is the portion where processor is asserting busy signal, and this is the portion where nobody is asserting busy signal, so the control is being handed over. As you can see, it's a bar here, so it's a active low signal. You understand active high and active low signals? एक्टिव हाई और एक्टिव लो सिग्नल्स आप समझते हैं ना, या नहीं समझते? हाँ या ना, कुछ तो बताइए भैया। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आई एम कनेक्टेड, कैन यू हियर मी? Yes, sir. You guys understand active low and active high? Yes, sir. Can you tell me what it is? So like that, it will get triggered when it is active high. So when we will given high signal, like when we give one input, so it will get triggered. No, it's only mean what I actually am looking for the meaning is active high signal वो सिग्नल है जो वैल्यू होने पर होंगे एक्टिव, और एक्टिव लो सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जो जीरो वैल्यू होने पर एक्टिव होंगे। तो जो भी एक्टिव लो सिग्नल्स होंगे उनके ऊपर एक बार होगा। So you can see that there is a bar over BBSY. तो जब ये जीरो वाला पोर्शन है, can you see this cursor? ये आप कर्सर आपको दिख रहा है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Okay. ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी,
trying to find a freehand drawing so that I can point that out. Okay, let's try with this one. So ये वाला जो सिग्नल है आपका, ये वाला पोर्शन जो इस सिग्नल का है, शायद नहीं दिख रहा है मुझे। इसमें आपको ये वो सिग्नल है जब प्रोसेसर ने BBSY सिग्नल जनरेट किया है, यानी बस बिजी है क्योंकि प्रोसेसर ने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ये वाला पोर्शन जब वो है, ये वाला, इसमें वो वाला टाइम है जब प्रोसेसर ने हाई करके इसको छोड़ दिया है। नाउ जब DMA कंट्रोलर 2 को वो मिल गई है बस, तो उसने इस वाले पोर्शन में अपना एक BBSY सिग्नल जनरेट किया है, तो अभी बस फिर बिजी है। जब उसने पूरा ट्रांसफर कर लिया तो फिर वो वापस उसको छोड़ देने वाला है। ये वाला वो पोर्शन है जब वो छोड़ देगा, और उसके बाद फिर प्रोसेसर उसको दोबारा ऑक्यूपाई कर लेगा या फिर किसी और आर्बिट्रेशन प्रोसेस में वो दोबारा किसी को मिलेगी। ये बात समझ में आती है आप सभी को? यहाँ तक की क्लैरिटी है? Yes, sir. Move on. अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन और सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन में अंतर ये है कि सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन एक सेंट्रल डिवाइस जनरली प्रोसेसर कंट्रोल करता है, whereas डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन सारी डिवाइसेस मिलकर कंट्रोल करती है। और जनरली जो उसका तरीका है वो ये है कि उनके आईडीज होते हैं हर डिवाइस के अपने, उन आईडीज के बेसिस पर आर्बिट्रेशन होता है। एंड जनरली द प्रोसेस सिस्टम इज कि यू ऑलवेज प्रेफर हायर नंबर आईडी ओवर लोअर नंबर आईडी। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल पहले मैं ले लेता हूं, उसके बाद फिर इसको हम दोबारा देखेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। जैसे दो डिवाइसेस हैं जिनका आईडी लेट्स से 5 और 6। 5 को जब आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो क्या बनेगा? 0 1 1 0, नहीं 0 1 0, क्या बनेगा बताइए? बताइए बताइए। क्या बनेगा? 101 0 1 0 1। और 6 का क्या बनेगा? 0 1 1 0। अभी जब इन दोनों डिवाइसेस ने मान लीजिए रिक्वेस्ट किया, इसने भी PR किया और इसने भी PR किया, तो इन दोनों के बस रिक्वेस्ट्स में ये इन दोनों आईडीज को, यानी 0 1 0 1 और 0 1 1 0, इनको हम एंड करेंगे। ठीक है, इसको एंड किया तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, फिर ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। ठीक, ये 0 आया, ये दोनों डिवाइसेस का आईडी 0 ही था। इन्होंने मतलब दे आर स्टिल इन रेस, उनको लगता है कि हमने 0 भेजा था एंड 0 इज कमिंग, सो नोबडी इज इन कंपटीशन, राइट। उसके बाद जब वो सेकंड बिट पर एग्जामिन करने जाते हैं तो 1 1 1, तो ये वाले डिवाइस को और ये वाले डिवाइस को, दोनों को ये पता लगता है कि दे आर इन रेस,
क्योंकि दोनों ने 1 assert किया था, दोनों के आईडी के हिसाब से 1 assert किया गया था, एंड द आउटपुट दैट दे आर रिसीविंग इज 1। जब तीसरी बिट पर जाते हैं तो यहाँ पर 0 मिलता है। ठीक है, हेलो, Yes, sir. तो जब यहाँ पर 0, सॉरी, it will be odd actually, it will not be ANDed, it will be odd. So यहाँ पर 1 और 1 आएगा। तो जब ये 1 देखने जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने 0 भेजा है और इसने 1 भेजा है, तो इस डिवाइस को ये पता चल जाएगा कि मेरे से कोई हाई प्रायोरिटी वाला इस रेस में है, सो इट विल विथड्रॉ। और जैसे ही ये विथड्रॉ करेंगे तो ये इस वाले सिग्नल को और इस वाले सिग्नल को रिमूव कर लेंगे। तो अभी क्या हो गया, यहाँ के बाद जब नेक्स्ट बिट देखने जाएंगे तो इस नेक्स्ट बिट के लिए अब ये लो हो जाएगा, नहीं ये 0 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है ही, सो इट विल गेट 0। गेटिंग माय पॉइंट? इनिशियली जो और हो रहा था वो 0 1 0 1 में हो रहा था और 0 1 1 0 में हो रहा था। आफ्टर दिस पॉइंट और होना शुरू हुआ, वो ये वाले डिवाइस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, सो इट हैज बिकम 0 0 0 0 and 0 1 1 0. So now because this is getting 0, so this has got won the arbitration and this will use the bus. You got the point? ये बात समझ में आ रही है आपको? या जैसे मान लीजिए अगर 1 0 0 0 और 0 1 1 1 इन दोनों के बीच में अगर आर्बिट्रेशन होना है तो कैसा होगा? यहाँ पर 1 आएगा, दिस डिवाइस विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये तो कोई मुझसे हाई प्रायोरिटी वाला कंपटीशन में है, सो दिस विल विथड्रॉ इटसेल्फ एंड देन उसके बाद फिर 0 0 0 आएगा, सो दिस विल गेट द बस एक्सेस। Could you understand that? ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आ रही हो? ठीक है ये? So now let's move on to the slide. If you have any doubt, kindly ask. I'm moving on to slide. So now let's see what is being said. All devices waiting to use bus share the responsibility of carrying out the arbitration process. Each device is assigned a 4-bit ID number, as I told you about. All devices are connected using 5 lines, 4 arbitration line to transmit ID and 1 line to start arbitration signal. मैंने जब लोगों ने ID transmit कर दिया उसके बाद वो एक arbitration signal जाएंगे. To request a bus device, assert the start arbitration signal, place its 4-bit ID. The pattern that appear on the arbitration line is the logical or of 4-bit device IDs on the placed bus arbitration line. जैसे हमने वहाँ पर किया कि 1 0 0 1 को 1 0 1 1 0 1 0 1 को 0 1 1 0 के साथ और किया. So this is the kind of hardware circuitry for this. So you can see that 0 1 0 1 and 0 1 1 1. There are 2 devices that are actually contending for this. यहाँ पर कौन जीतेगा इसमें? बताइए. हाँ?
इस आर्बिट्रेशन में कौन जीतने वाला है, कोई बता सकता है क्या? हेलो, हेलो, इस आर्बिट्रेशन में 0,111 जीतेगा, because 0,111 has got a higher number. So when this 0 and 0 will be logically odd, यानी ये वाली लाइन पे ABR3 वाली लाइन पे, so they will see it is received as 0, not a problem. When this 1 and 1 will be odd, that is on ARB2 line पर, they'll again see 1, not a problem. When this guy is this 0 and 1 will be odd, here again 1 will come, so this guy will understand that okay, I have lost the arbitration, so this will make it 0 and this will also make it 0. So both these zeros actually ensure that this guy will understand that this has won the arbitration, right? So this way distributed arbitration takes place. So if it detects a difference, it transmits zeros on the arbitration line for that and or lower bit positions. That's what I'm saying. And that the pattern that appears on the arbitration line is the logical OR ID placed on the arbitration lines. So these are the two kind of arbitrations that actually takes place. Any confusion about this? Or we should go for buses? इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग बसेस पे जा सकते हैं। हाँ, हेलो, एनी कंफ्यूजन अबाउट इट? एनी कंफ्यूजन अबाउट इट? ठीक है, ऐसा लगता है कि there is no confusion. So what is a bus? We have discussed it a bit number of times. Can you tell me what is a bus? Can anybody tell me what is a bus? कोई बता सकते हैं बस क्या चीज है? बताइए भाई। For devices. What do you mean by for devices? Somebody has written over chat for devices. What do we mean by for devices? Group of lines connecting path for devices. So, I mean, how it is different with normal wires? Or it's just normal wires? तो बस दो डिवाइसेस के बीच में काम नहीं करते, बस मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में काम करते हैं। और इसमें तीन टाइप्स के लाइंस जनरली रहते हैं। वन इज डेटा, another is address, and another is control. और जनरली जो बस होती है वो डेटा और एड्रेस और कंट्रोल के लिए अलग नहीं होती,
एक ही बस अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं और उसको अलग अलग तरह से यूज करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरली यूज्ड। तो कैसे यूज करना, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन योर आईओ इंटरफेस, और उसी की हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कंट्रोल सिग्नल में जनरली एक जो बहुत कॉमन सिग्नल है वो हम यूज करते हैं R, W बार, यानी एक सिग्नल है RW बार का मतलब ये है कि जब ये 1 होगा तो बस पे जो भी लिखा है वो रीड है, रीड करने के लिए है। जब ये 0 होगा तो बस पे जो भी लिखा है वो राइट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं राइट किया जा रहा है। तो दिस इज अ कंट्रोल सिग्नल दैट टेल्स यू कि ये रीड सिग्नल है या राइट सिग्नल है, या रीड बिट्स है या राइट बिट्स है। So this way it actually does. Then there is the idea of bus master that we are already aware of. तो कौन उस पर डेटा लिखेगा, that is called as, या किसके कंट्रोल में बस है, कौन उससे डेटा पढ़ेगा या कौन उस पर डेटा लिखेगा, जिसके कंट्रोल में बस है वो बस मास्टर कहलाता है। जनरली ये प्रोसेसर होता है, बट ये जरूरी नहीं है। नाउ इट मे बी DMA एज वेल, वन ऑफ द DMAs, DMA1, DMA2 etc. एंड जिसके लिए डेटा भेजा जा रहा है या जो टारगेट है उसको स्लेव बोलते हैं। तो जो डिवाइस है जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो स्लेव है, जो इंटरेक्शन कर रहा है वो मास्टर है। अब इसके दो तरह के ऑपरेशंस पॉसिबल है। वो मास्टर और स्लेव कैसे, मास्टर कैसे डिसाइड करते हैं आपको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस हैं। इसके दो तरह के तरीके हैं जिनसे बस को आप यूज करते हैं। एक कहलाता है सिंक्रोनस बस, और दूसरा कहलाता है असिंक्रोनस बस। किसी को पता है क्या कि असिंक्रोनस बस और सिंक्रोनस बस में क्या अंतर है? किसी को आइडिया है इस बात का, या कोई गैस वर्क से बता सकता है कि सिंक्रोनस बस और असिंक्रोनस बस में क्या अंतर होगा? Anybody? So सिंक्रोनस बस में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेम क्लॉक पल्स से ऑपरेट होते हैं, सेम क्लॉक पल्स, यानी सारे डिवाइसेस जो इसमें ऑपरेट कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हैं। इसमें डिफरेंट क्लॉक पल्स हो सकती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। So this is one example of synchronous bus, जहां पर एक प्रोसेसर मास्टर है और वो कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है एक पेरिफेरल को या एक डिवाइस को। So you can see
ये क्लॉक पल्स है, आपके सारे डिवाइसेस के लिए सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर वही चेंज होगा, यहाँ पर वो चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एड्रेस एंड कमांड लाइन है, एक डेटा लाइन है, और हमने पूरे ड्यूरेशन को 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, T0, T1 एंड T2। T0 वो टाइम है जहां पर मास्टर, जनरली हम इस केस में प्रोसेसर मान रहे हैं अक्सर, वो डिवाइस का एड्रेस उस पर प्लेस कर रहा है बस पर, यानी ये वाला जो पोर्शन है यहां पर डिवाइस का एड्रेस प्लेस किया जा रहा है। और साथ में क्योंकि इसमें कंट्रोल भी जा रहा है तो ये इंडिकेशन जा रहा है, यानी RW जो आपका सिग्नल था वो 1 होके जा रहा है, 0 होके जा रहा है, 1 होके जा रहा है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये रीड ऑपरेशन। अब क्योंकि ये बस एड्रेस प्लेस कर रही है, ये मास्टर जो है बस एड्रेस प्लेस कर रहा है, तो ये बस एड्रेस ये बताएगा कि ये किसके लिए रीड ऑपरेशन, यानी ये किसको डेटा पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्यूरेशन है T0 से T1 तक की, वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें डिवाइस ये पढ़ के समझ सके कि उसके लिए एड्रेस किया जा रहा है, और जो मैक्सिमम डिले है दो डिवाइसेस के बीच का, उससे ये ज्यादा होना चाहिए ताकि किसी तरह के रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर तब तक डिवाइस ये समझेगी नहीं कि उसके लिए डेटा भेजा जा रहा है, तो उसके बाद जो डेटा आ रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इस पोर्शन में इट इज बीइंग टोल्ड टू द डिवाइस कि यू आर द वन फॉर विच वी आर सेंडिंग द डेटा, एंड नाउ आफ्टर T1 to T2 वी आर सेंडिंग द डेटा इटसेल्फ। तो एड्रेस स्लेव के लिए ये रीड ऑपरेशन है, तो जिस भी डिवाइस को एड्रेस किया जा रहा है वो यहाँ पर अब डेटा रख देगी, और उस डेटा को मास्टर ले लेगा। मास्टर इस डेटा को अपने बफर में ले लेगा, इस पॉइंट पर बफर से फिर उसमें ले लेगा, अपने सिस्टम में ले लेगा। So there are 3 things happening in this timing diagram. At T0, master is placing the device address to which it has to be, it is communicating, and it is telling also that okay, this is the read operation, I am waiting for the data. At T1, the device is actually putting the data, because by now it has learned that it is the device that has actually been asked to give the data. So it will put the data, and till T2 the data will be stored into the input buffer of the master, and from that the data will be transferred to the system. इतनी बात समझ में आती है या कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो बताइए। Does it make sense? ये टाइमिंग डायग्राम आपकी समझ में आता है क्या? Can you hear me? Can you guys hear me? Arvind? Yes, sir. Arvind? Yes, sir. Yeah. Could you understand that? Yes, sir. आपको समझ में आया जो डिस्कस किया गया? अरविंद? Yes, sir. Hello. समझ में आ गया क्या मैंने डिस्कस किया जो? अरे आप बार बार म्यूट कर देते हो आंसर देने के पहले ही।
Yes, sir. आवाज Arvind, Yes, sir. Hello. can you explain me what I have discussed by now? फिर mute. Hello. Arvind, Yes, sir. Hello. Hello. explain what we have discussed. So first of all, master will indicate the address from from where we have to collect the data. It will place the address on the bus. Then the master will save the data in its buffer time, and when the clock triggers, the master will place the data in the system. Okay. So why we are calling it synchronous bus? The synchronous means they are acting on a one single clock system. All the systems are working on the single clock system. Yeah. Say it like this, right. So we are calling it, synchronous because all the devices and master is using the single clock, same clock. So now let's see a more realistic diagram. What actually happens? It does not happen the way this diagram actually explains this. This actually happens this way. So what is the difference you see in this thing and the previous thing? So can you please repeat So the point question? is there is some. आपने पीछे वाला जो डायग्राम देखा और आप ये जो अभी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पीछे वाले डायग्राम में हमने ये माना था कि बस पर डेटा अपीयर होने में कोई टाइम नहीं लगता. As soon as you put that data or address on the bus, it immediately reaches everywhere. But that is not really the case. तो वो जो डिले है ये डायग्राम उसको दिखा रहा है. So now you can see कि यहाँ पर थोड़ा सा डिले है जब एड्रेस एंड कमांड इस पे अपीयर हो रहा है. डाटा मास्टर तक पहुंच रहा है, उसमें यहाँ पर आपको डिले दिख रहा होगा. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्रेस एंड कमांड बस पे दिख रहा है, लेकिन जब वो स्लेव को दिख रहा है एड्रेस एंड कमांड, वो उसके भी थोड़ा बाद में, राइट? और उसी के करस्पॉन्डिंग जो डिले है वो आपको इसके यहाँ पर डेटा पुट इन करने में दिखता है. यानी यहाँ पर ये जो स्लेव है ये डेटा रख रहा है और मास्टर तक इसके थोड़ा और बाद में पहुंच रहा है. सो देयर इज सम डिले दैट इज हैपनिंग everywhere in the bus. So this diagram is showing you a realistic picture. Things are still the same. Still the clock is 1 and still it's a synchronous bus system. But this is actual system. There is some delay happening. So while designing a system like this, we are supposed to consider this delay. Does it make sense? And then there are few more things. तो आप यहाँ से एक से ज्यादा डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो डिवाइसेस सारी एक स्पीड की नहीं होंगी, कुछ फास्ट होंगे, कुछ स्लो होंगे. तो आपकी बॉटलनेक ये है कि आपको जो भी डेटा ट्रांसफर करना है उसमें उस स्पीड का ध्यान रखना है कि वो जो स्लोएस्ट डिवाइस है वो उस पर काम कर सकनी चाहिए. अगर वो उस पर काम नहीं कर सकती है तो फिर जब उसका चांस होगा तो then it will be a overrun kind of system and you don't know actually कि कब उसका चांस होगा. So you have to design this as per the speed of slowest device, right?
एंड यू इन दिस सिस्टम यू आर नॉट श्योर कि आपने जब बस के साथ कुछ स्लेव के साथ कुछ कम्युनिकेट किया है तो उसको वो मैसेज मिला है कि नहीं मिला है। जैसे ये एड्रेस जो है वो स्लेव को मिला कि नहीं मिला ये इसमें कहीं नहीं पता लगता। एड्रेस स्लेव को नहीं मिला हो, रीड राइट स्लेव को नहीं मिला हो सिग्नल, आपने तो मान लिया भेज दिया और मान लिया कि मिल गया। So because of some malfunction that may actually not happen at times. ये इसका एक प्रॉब्लम है। So to avoid that problem, you can see that there is one more signal added to this, and that is slave ready. Slave ready ये बता रहा है कि हाँ भाई इसको सिग्नल मिल गया है, ये तैयार है इसके लिए, इसको ये कर सकता है। So now you can see that whole diagram is little changed. एड्रेस तो आपको वैसे ही दिख रहा है, कमांड भी वैसे ही दिख रहा है, डेटा में और एक नया कमांड, नया आपने सिग्नल ऐड किया स्लेव रेडी। तो स्लेव जब डेटा स्लेव को ये पता लगा कि उससे डेटा मांगा जा रहा है, यानी वो डेटा पेस्ट करने की पोजीशन में है, उस समय वो एक सिग्नल असर्ट करता है जिसको वो कहता है स्लेव रेडी, दिस इज अ स्लेव रेडी सिग्नल, और उसी टाइम वो डेटा बस में रखता है। सो दिस टाइम इज एक्चुअली दिस स्लेव रेडी सिग्नल टेल्स द मास्टर दैट ओके नाउ आई कैन टेक द डेटा फ्रॉम द बस। अदरवाइज वो डेटा रखे नहीं और कुछ रैंडम वैल्यू जा सकती है। So this is the point that has to be taken care of by the synchronous bus, and this is being taken care of by slave ready. ठीक है, ये इतनी बात समझ में आती है आपको? Is it okay? Yes sir. और आगे चले अभी तो बात कर सकते हैं असिंक्रोनस बस की। असिंक्रोनस बस में कोई भी सेम क्लॉक पल्स नहीं है। तो जब इस तरह का होता है तो असिंक्रोनस सिस्टम्स में हम जो यूज करते हैं वो सिस्टम होते हैं हैंडशेक सिस्टम्स। हैंडशेक सिस्टम्स मतलब दे हैंडशेक एंड डिसाइड दैट ओके नाउ डेटा ट्रांसफर कैन हैपन। यस कुछ पूछ रहा है कोई क्या? Is there a question from someone? Huh? So that person left the maybe there was some जो पूछ रहा था वो चला गया क्लास से, ऐसा? yes sir. चलिए, वो कुछ और कह रहा होगा, वो कुछ पूछ नहीं रहा होगा। We'll just quickly go through a synchronous bus and then we'll stop for today. तो ये हैंडशेक है, उसके लिए हम दो सिग्नल्स यूज करते हैं। एक सिग्नल तो पीछे आ गया था स्लेव रेडी, अभी यहाँ पर एक सिग्नल और हम इसके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्टर रेडी। तो मास्टर रेडी सिग्नल इज asserted by master to indicate the slave that it is now ready for data transfer, and slave ready signal is asserted by slave in response to master ready that indicates that now slave is also ready data transfer। अभी रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा, उस ये बात उससे रिस्पेक्टिव है। इट विल टेल अदर पार्टी दैट नाउ इट इज रेडी। ठीक है, अभी हम इसका एक टाइमिंग डायग्राम देखेंगे। So this is the kind of timing diagram for a asynchronous data transfer। सबसे ऊपर वाली लाइन में आप देख रहे हैं एड्रेस इन कमांड है, यहाँ पर एड्रेस आपने उसमें रख दिया है। फिर मास्टर रेडी सिग्नल असर्ट किया मास्टर ने,
ये मास्टर रेडी सिग्नल जब भी स्लेव ने देखा, ये वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि ये स्लेव ने ये सिग्नल यहाँ पर देखा और स्लेव ने उसको उसके रिस्पॉन्स पे सिग्नल असर्ट किया स्लेव रेडी। अभी जब ये स्लेव रेडी सिग्नल मिल गया तो इसका मतलब मास्टर को पता लग गया कि नाउ डेटा इज कमिंग। एंड जैसे ही स्लेव रेडी सिग्नल, पीछे भी आपने देखा, रखा था जब स्लेव ने, तो उसी समय डेटा डाला था। सो नाउ एज सून एज स्लेव रेडी सिग्नल इज पुट इन, डेटा हैज आल्सो बीन पुट इन। मास्टर ने ये सिग्नल फटाफट वहां से उठा लिया एंड इट इज फिनिश्ड। So you can see what is happening at T0, T1, T2, T3, T4, T5. T0 पे master places the address and command information. T1 पे master asserts the master ready signal. And then at T2, slave in response to master ready asserts the slave ready. And at the same time it also puts the data. And then T3 पर master ready, slave ready signal master को मिल जा रहा है। तो master now removes the command and address information and it puts the, it reads the data and slave receives at T5, slave receives the transition of master ready signal from 1 to 0. So now it removes the data. यानी इसको पता लग गया कि भाई अब ये इस master ready नहीं है तो ये data हटा देगा. So this is the process. You can see that there is no synchronous clock is needed in this. लेकिन आप देख सकते हैं कि इन सारी चीजों में कुछ डिले आ रहा है. So आप asynchronous करते हैं सिस्टम को तो सिस्टम सिंपल हो जाता है, बट उसकी स्पीड कम हो जाती है. So there is a trade-off. If you want to have a little complicated system, if you can afford that kind of complexity, synchronous systems are definitely better speeded systems, whereas in asynchronous systems, speed is compromised, but then the things are little more simple. Does it make sense? Yes, sir. So there is a comparison. Does it make sense? So asynchronous bus with full handshake is limited by 2 round trip delays, and data transfer using a synchronous bus involves only 1 round trip delay. So you can see that there is a faster way. So we'll stop here for today. If there is any question by now, kindly ask, or otherwise we'll discuss interface circuits in the next class. Is it okay? Fine? Okay. So we'll stop here.